Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav, and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. So as you know that what we discuss in news analysis, like majorly we discuss about important articles, and apart from that we also discuss about any Supreme Court verdict, any amendments and bills. So I hope you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. You guys are doing well, and please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Okay, so here is the quote of the day that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is questions of the day. We'll ask you the 5 questions at the end of this session, and here is quick tips. With the help of mnemonics, we'll got to know the any important topics. And here is the very first article is talking about 2+2 dialogue between India and US. So what kind of important takeaways that you should know about in order to complete your current affairs? And the second thing that you should know about, like what is 2+2 dialogue, when it was started, how many countries are involved and how many ministers are involved. 2+2 का मतलब क्या है, 2 ministers अपने साइड से होंगे और 2 उनके साइड से होंगे. फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट, पहले आपको ये जाननी चाहिए कि 2+2 डायलॉग जो है इंडिया और यूएसए के बीच में है. दैट टुक प्लेस इन वाशिंगटन डीसी. वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट. और ये हमारी फोर्थ 2+2 डायलॉग है. कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में. ये वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज स्टार्ट इन 2018. इसमें क्या होता है हमारे, देखो आप इसमें देख सकते हो डिफेंस मिनिस्टर एंड हमारे एस जयशंकर साहब यहाँ पे हैं और उनके यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर. तो आप इसको याद रखो FD, 2+2 FD मतलब फॉरेन और डिफेंस यहाँ पे होंगे. कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक 2+2 डायलॉग इज विद आर 2 मिनिस्टर्स. एग्जाम्पल वहाँ पे लिख देंगे होम मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल. तो आपको ही पता होनी चाहिए. So India and Australia have reaffirmed to work together across different sectors to strengthen their bilateral ties. So in a joint statement that released after 2+2 dialogue, 2 sides laid out their vision and crucial areas. Recently ये कहाँ पे हुआ है? Washington DC में हुआ है. And India के external affairs minister and defense minister meet there with their American counterparts. This meeting was held on the sidelines of a virtual meeting between PM of India and President of the US. So the US is India's oldest and most important 2+2 talks partner. So the first 2+2 dialogue between the two countries held in Trump administration 2018. So recently 2+2 dialogue India और US के बीच में हुई है, right? But यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इसका मेन पर्पस क्या है. So that boosting different ties. First Israel-Hamas war के ऊपर, that call for the rule-based Indo-Pacific. सेकेंड लाइक स्ट्रेंथनिंग क्वाड. क्वाड में पता है आपको कितने कंट्रीज हैं? दैट इज क्वाड विच स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें आपके यूएसए हैं, इसमें अपना प्यारा देश भारत है, इंडिया, एंड फोर्थ वन है आपका जापान. सो द स्ट्रेंथनिंग क्वाड इट मीन्स दे अग्रीड टू एम्पावर क्वाड एंड इंडिया सेड इट लुक्ड फॉरवर्ड टू वेलकमिंग ऑस्ट्रेलिया PM एंथनी एल्बनीज at Quad Summit in Delhi next year. तो Quad Summit है वो दिल्ली में होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा. फोर्थ जो हमारा मेन एजेंडा है टू कंडक्ट द 2+2 dialogue meeting, that cooperation on maritime supporting technologies. So in that supporting technology, like they discuss about the highlighted issues about technology and industry cooperation as the essential pillars of, as you know, the relationship between the two nations.
And the third thing that you should know about the critical minerals, they talk about like as we know that हमारे कंट्री ने सारे के जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग्स थी दैट एक्नॉलेज इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टू टॉक अबाउट बायोफ्यूल्स अलायंस. सो मोस्ट ऑफ द आर डिपेंडेंसी दैट वी हैव ऑन द मेनली ऑन किस पे होता है हमारा डिपेंडेंसी ओपेक कंट्री के ऊपर. उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि बायोफ्यूल है. अब बायोफ्यूल पॉलिसी में हमारे पास गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए. उसके बाद जो नेक्स्ट इस मीटिंग का मेन एजेंडा है दैट इज़ ग्लोबल गवर्नेंस, दैट इज़ कमिटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म्स एजेंडा. उसके बाद सेकेंड हमारा है कि इसमें इंक्लूड करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एक्सपेंशन करने के लिए मेंबरशिप. एज वी नो दैट कि UNSC जो है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स दैट वी हैव 15 मेंबर्स एंड इंडिया इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर्स, right? That's why we do not have veto power. So that all things that you should keep in mind. And the very few things that the important takeaways that you should know about 2+2 dialogue is for the defense and ministers and external affairs ministers of the two nations, India and Australia. Initially, it started in the year of 2018. The first 2+2 dialogue that held between two countries were in the year of 2018. And more things that you should know about 2+2 dialogue that foreign and defense minister. जैसे भी मैंने आपको बताया 2+2 इसको आप FD लर्न करो. F स्टैंड फॉर फॉरेन, D फॉर डिफेंस मिनिस्टर. ये एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें एंड इनका मेन पर्पस होता है टू एनहांस द स्कोप ऑफ डायलॉग बिटवीन दैम. So having such a mechanism that enables the partners to better understand and appreciate each other's strategic concern. So 2+2 partners में क्या है कि US India is the oldest and most important 2+2 talk partner. And ये जो फोर्थ वाली हमारी हो रही है अभी, फोर्थ जो हमारे 2+2 डायलॉग्स है आफ्टर 2018 के बाद. So additionally, India has held 2+2 meetings with ministers from Australia and Japan, US and Russia. Next year we are going to summit, CUET summit, which is quadrilateral dialogue, and that is for that we have 4 nations in quadrilateral dialogue, one USA, Australia and उसके बाद India and then next है आपका Japan. So recently India and US are currently negotiating deals with the purchase of MQ-98 MMB unmanned aerial vehicles that the licensed manufacturer of General Electric F414. Sure. Next one. Here the article talking about where does India stand on Israel-Hamas war. So first thing that you should know, what is India stance on the West and global South. So is it now closer to Western countries than the global South, and how will this impact India's relations with different powers in West Asia? And what about India's relation with Iran, Israel and chief rivals? So over the past weeks, India has expressed itself in statements, joint statements and vote at the United Nations on the ongoing Israel-Hamas conflict. That is a voice of global summits. So what is the position of India has articulated? So India's position has articulated since the October 7, the terror attack along with the Israel-Gaza border by Hamas that killed more than 1,200 people, and then on the bombardment of Gaza by Israel, so where more than 13,000 have been killed, has been multi-layered. और मोदी गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया है इसराइल को. So India has reaffirmed its support for two-state solution, including a sovereign, a viable state of Palestine existing in peace alongside Israel that supported a socio-economic welfare and of the Palestinian people, as and sent 70 tons of humanitarian assistance. So is India position closer to the West or the global South? बात करते हैं कैसे. Traditionally, since its leadership of the non-aligned movement, और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो NAM है इसको स्टार्ट किया था, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने. एंड सिंस इट्स लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया पोजीशन ऑन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हैज ऑलवेज अलाइन्ड विद द ग्लोबल साउथ, दैट ऑफरिंग फुल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीन कॉज. सो इट इज कॉल फॉर द टॉक्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट. सो सिंस द कारगिल वॉर कब हुआ था माय फ्रेंड्स? ये आपका हुआ है 1999 में.
1999. So since the Kargil war, where Israel provided India crucial and timely shipments of weapons and ammunition, a study of India's statement at the UN showed a softening of language against Israel, including toning down like condemnation of Israel, that airstrike of Gaza. So how will this impact in the West Asia? कि इंडिया की टाइज जो है ईरान के साथ है, एंड इसराइल चीफ एनिमी दैट हैव बीन स्ट्रेंथनिंग बाय इनिशिएटिव लाइक द चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है आपका, एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू द सेंट्रल एशिया and Russia that could also be affected. It seems that the Modi government is choosing one side more clearly than the other. अब देखो कैसे, मेजर रीज़न देखें यहाँ पे, हम इसराइल को क्यों सपोर्ट करें? 3 रीज़न है इसके पीछे वाई इंडिया शुड ऑफिशियली स्टैंड विद इसराइल। इन 1999 जब कारगिल वॉर के टाइम में, दैट वॉर उस टाइम में इसराइल ने हमें सपोर्ट किया था, आर्म्स, एम्यूनेशन एंड लेज़र गाइडेड मिसाइल। And 26/11 Mumbai attack के टाइम में they were ready to provide a wide range of assistance in the battle to end the siege of Finnish and terrorists. And when India faced the challenge of COVID, Israel sent medical aid, including oxygen concentrators to combat the severe outbreaks. तो ये 3 चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए. We should not to forget in terms of Israel and India's relation is concerned. And here is CERT के बारे में. So CERT क्या है? In India's nodal agency that respond to computer security breaches. CERT है Computer Emergency Response Team. जो CERT है आपका, that is Computer Emergency Response Team, that is CERT. So Union government ने अभी ऐड किया CERT को in among list of organization that are exempted from the ambit of the Right to Information Act. और मैंने आपको बताया CERT एक नोडल एजेंसी है for responding to computer security incident as when they occur, and one of its primary objective is to enhancing security awareness among common citizens, and it functions under Ministry of Electronics and Information. जो CERT है वो काम करता है Ministry of Electronics and Information Technology. So there are, we can say, around 26 other intelligence and security organization established by the Union government. जैसे इसमें आपका IB भी है, Intelligence Bureau भी है, RAW जिसे कहते हैं, Research and Analysis Wing, Director of Enforcement, National Technical Research Organization, NTCRO, and that exempt under RTI. ये RTI के अंदर नहीं आता. So RTI Act जो था, Right to Information Act, that was in the year of 2005. So that said, the legislation shall not apply to intelligence and security organization specified in the second schedule. So that provided that the information pertaining to the allegation of corruptions and human rights violations shall not be excluded. So ये जो जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसके बारे में हम रिवील नहीं कर सकते. दैट इज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ RTI. So the CERT has been probing major cyber attacks in recent past. So it was the first responder to the ransomware attack on November 23, 2022 at AIMS, which had crippled the hospital information system HIS and e-hospital system for several days. चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है. which country recognize Hamas a terrorist organization? So Hamas जो है लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ट्यूसडे को, दैट कॉलिंग इट. इसमें हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे कंट्री ने डेजिग्नेटेड किया है हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, जापान है, पैराग्वे है, यूएस है. ठीक है. सो व्हाट डज डेजिग्नेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटेल्स? So government designated a terrorist organization under specific national law such as the Terrorism Act 2000 के according, that is Terrorism Act 2000, and in the UK, but India में हमारे इससे देते हैं UAPA के according. UAPA क्या है हमारा? Unlawful Activities
Prevention Act. और ये released in 1967 in India. So designation is based on a specific criteria that can extract a range of curves, including the freezing of assets and takeover of the properties of the designated organization. Currently हमारे इंडिया में 44 organization है that is designated terrorist organization under the first schedule of UAPA Unlawful Activities Prevention Act के अकॉर्डिंग. ये किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट अनाउंस करता है, राइट, एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी. Edinburgh to Kozhikode, how Kerala got UNESCO City of Literature. The 7th edition of Kerala Literature Festival that should attract hundreds of thousands of books lovers. As in previous year, it will be the first since UNESCO named Kozhikode a city of literature. So Kozhikode is India's first city of literature. It was in 2004 that UNESCO launched the Creative Cities Network. And the Forgotten Citizen. इसमें बात हो रही है कि लाइक जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं दैट ब्रेक्स इनटू नेशनल कॉन्शियसनेस ओनली अ फिगर ऑफ टेलीवाइज्ड ट्रेजेडी. तो बेसिकली कंसर्न ये है यहाँ पे कि द जो पॉलिसीज़ मेकिंग होती है दैट इज़ हाई, बट ऑलमोस्ट जितने भी पॉलिसी मेकिंग है उससे उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है. सो वी बिल्ड स्टैच्यू, नेम स्टेडियम्स विद द hagiographics to honor Bollywood stars, cricketers, politicians, and the many of celebrities. But for the human infrastructure of the nation, the women and the men who built tunnels and highway, run factories, so like that service middle class homes, and there are only obituaries for the anonymity. So basically, we have policy for making highways, but almost none for those who make them. Laws जो बने हमारे कंट्री के that govern workers' rights do not in general account for the needs of migrant workers. So in effect of migrant workers is reduced to an abstraction that providing labor but not being accounted for this or her humanity. क्योंकि labor जो हमारे यहाँ पे the state mechanism are largely uncaring of the specific and vicissitudes of migrant laboring that lives indicated by the fact the realm of labor laws. They are just one the intense Migrant Workmen Act 1979 that make any attempt to address the need of around 37% of the population, right? Chalo. And here we have SAARC country के बारे में. इसमें आपका MBBS स्पेन, SLN रखो, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल. सो क्विक टिप्स का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स वी लर्न द ट्रिक्स. एंड साब यहाँ पे क्या है? साब मतलब स्टेट इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद द भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल. एंड हियर वी हैव क्वेश्चंस ऑफ द डे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Indus river basin is extended up to, और ये आपका आंसर है इंडिया. Indus basin spread over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Punjab and part of Rajasthan, Haryana and Chandigarh. Annapurna certificate. So Annapurna certificate program is an initiative of the Niti Aayog, Food Safety and Standard Authority of India, FSI, Food Corporation of India. So ये है माय फ्रेंड. डी इज ऑप्शन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देखो, थर्ड में क्वेश्चन में क्या है? फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड एज गैस जाइंट इन आवर सोलर सिस्टम. सैटर्न, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून. नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर. मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस. नेपच्यून, सैटर्न, मार्स एंड यूरेनस. So gas giants are large planets composed mostly of gases such as hydrogen and helium with a relatively small rocky core. So the gas giant of our solar system, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, that together make up a group known as the Jovian planets. And fourth one is which substance is commonly used in cloud seeding to promote the formation of ice crystal in clouds? Sodium chloride, silver iodide, carbon dioxide and oxygen. So we have discussed many times about silver iodide for the crystals formation.
सो सिल्वर आयोडाइड जो होता है माय फ्रेंड, ये कॉमनली सब्सटेंस दैट यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग. When released into a cloud, silver iodide particles provide a surface for ice crystal to form around. और लास्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, बहुत इजी है, बहुत बार डिस्कस किया. नन ऑफ द अबव इज राइट आंसर डी. और ये रिपोर्ट किया SEI स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट. So this is all about the session dear students and I hope that you enjoyed the session a lot. We'll meet you. And हाँ, अभी आपकी मैराथन सेशन होगी GA Part 2 at sharp 4 o'clock this today evening. That is, stay tuned at 4 o'clock by Shaduk sir. So stay tuned and जो भी सेशन होंगी उस सेशन में जितने भी टॉपिक होंगे पूरे एक साल के वो आपके कवर होंगे. So stay tuned at 4 o'clock especially for the CLAT aspirants. So and please share that video to your friends also. And ये सेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं. And thank you so much for joining with us. If you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care.